So because you married young I would say कि इतनी मैं तो तुमसे भी छोटी थी जब मेरी शादी हुई थी, so I wouldn't really say that, but yes, nowadays people most of lot of girls, you know, they like यार career पे focus करना है, हमने पहले stable होना है and all that, which was working for you, and then when you also got married. But आजकल ज़्यादातर यंग लड़कियां ये नहीं करती, उनको माँ बाप कह रहे होते शादी कर लो, you know, 23 होगी, 24 हो गया, 25 हो गया, जो भी एज है, बट क्या आप ऐसी कोई एडवाइस यंग गर्ल्स को देना चाहती हो कि मैं गर्ल्स को नहीं एडवाइस देना चाहती. अच्छा, मैं बॉयज़ को एडवाइस देना चाहती हूँ. I hope I say this without yes please sounding wrong. No, but I feel why they are scared is कि बहुत जो driven जो हमारी girls हैं, मुझे लगता है कि they feel and you know, मतलब मैं harsh नहीं sound करना चाह रही, लेकिन मुझे लगता है कि societal pressures हैं and there's a certain expectation that when you get married you leave working. Why? And you don't get to make that choice, she does, you know. So maybe a lot of girls are scared कि फिर आगे से ये expectations होती हैं, they don't want to leave it, और मतलब why would they mix the two things? मेरा ख्याल है वो ऐसे नहीं सोचना चाहती, उनको सोचवाया जाता है. So in my case it was never a conversation. I mean, I'm gonna be who I am, you know, and that is how it should be. तो क्योंकि वो conversation नहीं थी, तो कोई वो नहीं था कि अच्छा कितने साल की होके करूँ या जब ये कर लूँगी तो करूँगी. It's just like I said, it went with the flow. तो वो चीज़ें कभी भी confused नहीं हुई. I think we both respect each other's individuality also. So that's really important. So I wouldn't advise the girls. Or maybe if I would advise them, it would be just keep following your dreams. Never give up on your dreams for anything. True. And maybe find someone who would be there with you in the dreams, you know, and not make you or kind of convince you or demotivate you in a way that you have to leave them if you choose that. ये थोड़ी मुश्किल choice है, and I think इस position में किसी को भी डाला जाए, अगर लड़कों को भी डाला जाए तो बड़ी imbalance हो जाएगा, confusion हो जाएगी. So I think the girls are at a very tough place when they have to make a choice. बिल्कुल. So that's a really great advice actually, and we should think of it this way कि because लड़कियों ज़्यादा यही होता है कि शादी हो जाएगी और ये सब कुछ बंद करके, क्योंकि ऐसा होता है ना, ऐसा होता है, ऐसी expectation भी आगे से होती है तो फिर जो कि I feel नहीं होनी चाहिए. I'm sure a lot of people will disagree with me, but let her choose. It's her choice. Yes. Yeah. मुझे जब कोई पूछता है about feminism and all, बहुत सारी बातें जो हम कर सकते हैं, लेकिन ये बेसिक है जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं. अगर if we can start with that, we'll probably be able to move forward, or we can keep debating and keep fighting with each other and just not have a solution. Yeah, true. Okay. अच्छा मुझे बताओ Titch Button, Faiza Iftikhar and Qasim Ali Mureed. The best team that I could have asked for. Okay. Yeah. बस यही पूछना था कि why Faiza Iftikhar, Qasim Ali Mureed, I think, and Farhan, I think हम चारों ने ये ड्रीम सबसे पहले साथ देखी है, and then we started working on it, and the rest of the team फिर सब जुड़ते गए. Obviously आपका एक पूरा crew होता है, you know, like each, although I would thank every person because हर बंदा जो टीम से जुड़ा है उसने एक वैल्यू ऐड की है. But these were the people, like the four of us, we were the ones who dreamt of it. बल्कि हम कभी अभी जब हमारी फिल्म ख़त्म हुई तो हम बात करते हैं यार, हम यहाँ सोफ़ों पे बैठ के एक फिल्म का सोचे थे यार, हमने बना ली है. So चलो ये तो एंजॉय करते हैं. कितना टाइम लगा पूरे फिल्म के प्रोसेस में तुम लोगों को? शूटिंग को तो 3-4 महीने, मतलब बीच में गैप्स भी होते हैं ऑब्वियसली शूटिंग स्पेल्स में. But overall the process I think took us about 2 years. Okay. Yeah. क्योंकि I am somebody who has learned from, I've been lucky like that. मैंने बहुत अच्छे फिल्म मेकर्स के साथ काम किया है. So I used to watch their way of working. Okay. तो I think I was always all ears about what's happening behind the camera, and थोड़ा बहुत जो आप सीखते जाते हैं और फिर आप भी इंस्पायर होते हैं कि अच्छा मैंने ये करना है. तो मुझे लगा कि it's better that we plan as much as we can on paper. Yeah. We didn't want to make any last minute things happen on set. तो मुझे लगा कि ये मैंने I've learned this from Fizza. I really look up to her. I've done my first film with her, Naam Wal Mufrad, and then I've learned this from Nabil. He was my director in the first film. And then Nadeem and Humayun, and you know, so I think I've been lucky like that. I got to work with such amazing people that
अगर मैंने थोड़ा भी किसी से सीखा है और वो सब जब इकट्ठा हुआ, सो आई फेल्ट कि हाँ चलो कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो प्रोडक्शन में सीधी आ गई, उस पर कुछ हुआ कि प्रोड्यूस करूं एक्टर के बाद मैं सीधी डायरेक्शन पे चली जाऊं, या अगला प्रोजेक्ट डायरेक्शन की तरफ कभी गया है के बारे में अभी मैं फील नहीं करती कभी नहीं? नहीं, मुझे अभी 2-3 दिन पहले भी सवाल हुआ कहीं। बहुत मुश्किल काम है वो भी। सो इट विल कम टू मी व्हेन इट विल कम टू मी इफ इट डज, इफ इट डज। ऑलराइट। सो या राइट नाउ आई फेल्ट फॉर प्रोडक्शन एंड आई डिड दैट, which wasn't easy either. I was learning every day. तो रोज़ आप कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं, आप अपनी गलतियों से भी सीखते हैं, आप हर दिन खुद को करेक्ट कर रहे होते हैं, especially when it's your first project. Yes. तो I was learning every day and I feel कि अभी तो डायरेक्शन नहीं पहुंची है मुझ तक। बहुत मुश्किल काम है। अच्छा मुझे बताओ कि इसमें मुहावरा भी नहीं है, like you yourself are not acting, and कभी सोचा कि मुहावरा भी हो, या फैमिली को किसी रीजन की वजह से नहीं लिया? So I'll tell you, Farhan is the hero of the film, as we know. अब बहन भाइयों को तो मैं नहीं इकट्ठे ले सकती ना, so ये नहीं हो सकता था। ये नहीं हो सकता। But if I had a character like that, I would have loved to, because it's always a relief when there's somebody that understands you and you know कि किस level पे communicate करना है। And I could not have done it. Why? Kasim, by the way, really wanted me to do it. फरा मैं नहीं कर सकती थी क्योंकि पहली फिल्म थी। और अगर उस एंड पे मैं इतना कुछ लर्न कर रही हूँ रोज, और हार्डशिप्स होती हैं, यू नो, प्रोडक्शन एंड तो वो मैं 2 कश्तियों में नहीं सवार हो सकती थी, यू नो। सो आई फील दैट वाज अ वेरी सेन एंड वेरी wise, because your focal point was only one. if you're learning something new, अच्छा एक चीज चलो, even if I say कि मुझे आती है एक्टिंग, हाँ वो तो मैं कर लेती, but then there was something which needed me full time, because मैं सीख रही हूँ, I'm not a pro at it, so that needed my time, and because it was our first production, we could not have put this into somebody else's hands. You know what I mean? कि आपको चीज़ें बहुत आप दिल से कर रहे होते हो, and you want them to go exactly the way you want them to go, so you have to be there. So I mean, ताकि दोनों चीज़ों में से कुछ भी compromise नहीं हो। बिल्कुल, बिल्कुल। It was important. And that's the right approach actually. And as you said, you've learned a lot from your previous, you know, directors. I think I've emerged as a very different and a new, and I don't know. Okay, tell me, as a also film producer also, do you think Pakistan में generally auditions होती हैं to cast, and do you think it should be there if it's not being there? और होना भी चाहिए। Like I came in the industry with an audition. I'm not sure if you guys have seen it. Yes, we have seen it. बड़ी मैं कोई confident के okay, I'll say this, I'll say that. But so I feel it is it's a very organic process, और वो होना चाहिए, और मुझे लगता है कि है। जितने भी हमारे channels हैं, या बहुत दफ़ा मैं देखती हूँ कास्टिंग कॉल्स हो रही हैं, यू नो, एंड आई फील जितना नया टैलेंट हमारी इंडस्ट्री में आता है हर साल, यू सी अ लॉट ऑफ न्यू फेसेस, एंड बहुत से लोग हैं जो इतना अमेजिंग काम कर रहे होते हैं, दे लाइक सच अ ब्रिलियंट फाइंड, इवेंचुअली यू रियलाइज कि अच्छा यार ये प्रोसेस होना चाहिए, व्हाई नॉट। सो आई थिंक हमारी इंडस्ट्री इस मामले में बहुत अच्छी है। Like I wouldn't compare with the other industries though, but हाँ मुझे लगता है यहाँ पर बहुत से लोग हैं जो बिल्कुल scratch से, like they didn't have any contacts or anything. Being a producer, being a young producer, do you feel it's in your advantage or disadvantage? Because you being a young producer means कि you're bringing the new perspective and you're different and और तरीके के challenges होंगे, तो उसके कुछ advantage and disadvantage के बारे में बताओ। I would say that अच्छा मुश्किलें भी थी, and when you get through them, you know, then you know कि अच्छा आपने अपना रास्ता बनाया और अब चीज़ें बेहतर हो रही हैं। पर मुझे लगता है the things that I was struggling with in the beginning was that मतलब जो भी मैं करना चाह रही थी, and then obviously there's a lot of work in the production, you know that. और पहले तो मुझे 2 घंटे ना ये कन्विंस करने में लग जाते थे कि I'm not a little girl, I'm going to produce this film, so it takes you time, you know. And being a girl, I'm sorry I'm saying this, but it's not a very easy world for girls. आपको ज़्यादा extra mile जाना पड़ता है to make the people believe in you, you know what I mean. So किसी ऐसे point में तुम्हें ऐसा लगा कि oh you have to, या तुमने मुझे जब भी कुछ मुश्किल लगता था, I would think about Fizza, I would think about, you know, Hareem, I would think about Momna Dured, and all the women producers that we have in the country. We have Amara and we have Sadia, and you know,
तो मैं सोचती थी यार इन्होंने भी तो किया है ना. सो I've got to be strong and I'm going to be patient with the people who don't understand or who kind of underestimate you. They have a different Absolutely. mindset different. और उसमें पता नहीं क्यों मैं उस वक्त को नहीं blame करती हूँ. I feel it's a major societal and familial conditioning that's going on and on and on and on. कि बहुत सारी चीज़ें जो लोगों को बड़ी normal लगती हैं वो होती नहीं हैं.